So today we are going to react about some mathematical concept. बहुत ही अच्छा concept है. You can see it yourself. Okay. The pigeonhole principle is one of those ideas that sounds completely obvious, but turns out to be pretty useful. लगता बहुत ही ज़्यादा obvious है, but जब हम ये questions इसके करते हैं तो हमें लगता है इसकी use case बहुत ही ज़्यादा है और ये सच भी है जो ये बोल रहा है ये बहुत ही obvious लगता है मगर जब हम इसको apply करने की कोशिश करते हैं तो लगता है Here's the idea. इस concept Let's की say कुछ there are वजन है. 4 pigeonholes, and let's also say we have 5 pigeons, each of which needs to be put into one of those holes. The pigeonhole principle says that after we've put each pigeon into a pigeonhole, there must be at least one pigeonhole that has multiple pigeons in it. And that's it. That's the whole idea. Or I suppose to state the principle a little more generally, if we have n pigeons put into m pigeonholes, and n is greater than m, then there must be at least one pigeonhole that contains more than one pigeon. When I first heard this principle, it just sounded obvious, and I wondered how an idea so straightforward and trivial could actually prove practical. Now the pigeonhole principle, what does it state? It states simply ये क्या बोल रहा है बहुत ही आसान सी चीज़ है. अगर हमारे पास 4 ब्लॉक हो जैसे अभी ये वीडियो में बता रहा है कि हमारे पास 4 बॉक्सेस है, हर किसी में एक पिजन आ सकता है और हमारे पास 5 पिजन्स है तो डेफिनेटली एक डिब्बे में एटलीस्ट 2 पिजन तो होंगे ही. बहुत ही ऑब्वियस लगता है. आप इस वीडियो में चेक करो, बोल भी रहा है कि ऑब्वियस लगता है एंड ऑब्वियस है भी. बहुत ही अच्छा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मगर इसकी यूज़ केस आफ्टर this I will show you some use cases of But it turns out a lot of problems have solutions that, in whole or in part, can be answered by applying the pigeonhole principle. Of course, usually we're not literally talking about pigeons and pigeonholes, but instead talking more generally about any objects. If we distribute n items across m groups, and there are more items than there are groups, then at least one of those groups must have more than one item in it. Solving certain problems, then, just comes down to identifying what our pigeons and pigeonholes actually are. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या बोल रहा है ये यहाँ पर आपके वो n बॉक्सेस दे रहा है और m बॉल्स ले रहा है. बॉल्स जैसे पिजन्स है तो m इज शुड बी ग्रेटर देन n. जब ये ग्रेटर होगा तो एटलीस्ट एक डिब्बे में 2 या एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि m ग्रेटर है. जैसे हम पिजन्स वहाँ पर 4 ले रहे थे तो यहाँ पर 5 ले रहे थे पिजन्स, सॉरी 5 पिजन्स ले रहे थे जैसे हम पहले, तो 4 बॉक्सेस थे तो डेफिनेटली एक बॉक्स में एटलीस्ट 2 आएंगे ना पिजन्स. तो सिमिलरली यहाँ पर ये बॉल्स ले रहा है इंस्टेड ऑफ पिजन्स. तो जो बॉल्स होंगे वो ग्रेटर होंगे देन द बॉक्सेस. जब बॉल्स ग्रेटर होंगे देन द बॉक्सेस डेफिनेटली एक डिब्बे में 2 एटलीस्ट 2 तो होंगे. एटलीस्ट का मतलब है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर 2 एक मिनिमम ले रहे हैं. So today, let's take a look at some interesting applications of the pigeonhole principle. And let's start with a puzzle. Say we have a chessboard, an 8x8 grid of alternating light and dark squares. If we take dominoes, each of which can cover up 2 of these squares, we can lay them out in such a way that they perfectly tile this chessboard. That's not too much of a surprise. There are 64 squares on the chessboard, and here we're using 32 dominoes to cover the whole board perfectly. With no dominoes sticking out, no square left uncovered, and no square covered twice. If we remove one square from this chessboard, it's pretty clear that it's now impossible to tile the board. There's an odd number of squares, but using dominoes, we could only ever cover an even number of squares. But what if we removed 2 squares from the chessboard, from opposite corners of the board? Is it still possible to tile this board perfectly? It might not be so clear at first, and you can try it, attempting to lay out tiles in just the right places, but ultimately you'll find that you won't be able to. Perfectly tiling this board with dominoes isn't possible. But how do we know? Well, to tile 62 squares, we would need 31 dominoes. And importantly, when each domino is laid on the board, it's going to cover up 2 squares, 1 dark square and 1 light square, no matter how that domino is oriented. अब देखो ये वीडियो ऊपर देखो कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको.
ये एक चेस बोर्ड है, 8 स्क्वायर्स एक साइड में, 8 स्क्वायर, टोटल 64 हुए। उसमें 2 कलर्स है, यू कैन सी, देखो आप देख सकते हो 2 कलर्स है। तो टोटल हमारे पास 64 है। अगर हम डोमिनोज ले, ये एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, इसमें 2 स्क्वायर्स आते हैं, क्या आते हैं 2 स्क्वायर्स। तो हर कोई डोमिनो जो है ना 2 कलर्स को हाइड करेगा। देखो आप देख सकते हो कैसे हाइड कर रहा है। तो क्या बोल रहा है ये कि इन केस वी रिमूव 2 कॉर्नर स्क्वायर्स। पहले तो हमने देखा कि पहली एग्जांपल आप देख सकते हो कि पूरा डोमिनोज इसको कवर कर रहा है। डोमिनोज अभी मैंने आपको बताया क्या है। मगर अगर हम 2 स्क्वायर्स कॉर्नर पे निकालेंगे, क्योंकि हम सेम कलर के निकाल रहे हैं, तो अगर अब हम इसको डोमिनोज डालेंगे तो डोमिनोज सारे कवर नहीं करेंगे। क्या हो रहा है एक्चुअली जो हमारे येलो कलर्ड स्क्वायर्स है वो 30 बन रहे हैं, क्योंकि हम 2 कॉर्नर्स पे निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो ऊपर, देखो आप वीडियो में यू विल सी। तो जब हम 2 निकाल रहे हैं तो टोटल हमारे पास 30 रह रहा है, क्योंकि हमारे पास 32 डोमिनोज थे कि 64 को कवर करने के लिए 32 डोमिनोज चाहिए। तो अभी हमने जो 2 स्क्वायर्स रिमूव किया, तो हमें एक रिमूव करना है डोमिनो, तो 31 डोमिनोज आ गए। तो अब हम पिजन होल प्रिंसिपल लगा सकते हैं। देखो सिंपली आप देखो, आप मानो 31 जो डोमिनोज है वो पिजन्स है, और 30 जो है वो पिजन होल्स है, जो 30 स्क्वायर्स है ऑन द बोर्ड। तो अगर हम अब देखेंगे तो एटलीस्ट एक डोमिनोज ऐसा होगा जो 2 डोमिनोज को कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक होगा। दैट मीन्स ये डोमिनोज फुली कवर नहीं करवाएंगे इस बोर्ड को। दिस इज वन एग्जाम्पल, वन रियल एग्जाम्पल ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, और बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये बता रहा है। मुझे बहुत पसंद आ गई ये एग्जाम्पल। And how many light squares are on this chessboard anyways? Well, a full chessboard has 32 light squares. But since we removed 2 light squares from opposite corners of this board, we now have 30 light squares. See where this is going? We can now apply the pigeonhole principle. Our pigeons are the 31 dominoes, and our pigeonholes are the 30 light squares. Each domino needs to cover one of the light squares, and since we have more dominoes than light squares, there therefore must ultimately be at least one light square covered by multiple dominoes. And since in a perfect tiling, each square should be covered by exactly one domino, we can therefore say that a perfect tiling isn't possible. नाउ द एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन, थोड़ा आपने देखा होगा कि क्या एग्जाम्पल क्या बोल रही है। तो अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा अच्छे से समझें तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर हम 5 पॉइंट्स लेंगे, कोई भी 5 पॉइंट्स लेंगे अर्थ में, कोई भी 5 पॉइंट्स लेंगे अर्थ में, क्या हम 4 पॉइंट्स एक हेमिस्फीयर में रखेंगे? हमें पता है हेमिस्फीयर का, हमें एटलीस्ट आइडिया तो होगा। हेमिस्फीयर एक हाफ ऑफ स्फीयर। Let's take a look at another example. Let's imagine planet Earth, which for simplicity, we'll here assume is a perfect sphere. Earth can be divided into a northern hemisphere and a southern hemisphere, but that's not the only way to divide the Earth into 2 pieces. A hemisphere is just any half of the sphere. And a closed hemisphere is a hemisphere that includes the dividing line between the 2 halves. So now, here's the question. If you pick any 5 points on Earth, can you find some closed hemisphere that includes at least 4 of those 5 points? We can try an example. We pick 5 points at random and try some different hemispheres. क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, यू कैन सी इट हियर। तो उसके हाफ करेंगे हम, तो 2 हेमिस्फीयर बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? 2 हेमिस्फीयर। जब हम एक हेमिस्फीयर, तो अगर हम कब अब 2 टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर है, एक तो ओपन है, एक है क्लोज्ड। क्यों है क्लोज्ड? जब हम उसकी बेस भी होगी, व्हेन वी टेक द बेस, जब हम बेस भी लेंगे तो हेमिस्फीयर क्लोज बनता है। तो अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि 4 पॉइंट्स एटलीस्ट होंगे यहाँ पर कि नहीं? In this case, we can eventually find a hemisphere that contains 4 of those 5 points. But will that always be the case? It turns out the answer is yes. We can start by saying that with any 2 points on Earth, we can use those 2 points as the dividing line between hemispheres. After that, we're left with 3 remaining points, each of which must belong to one of these 2 hemispheres. Do you see where the opportunity for the pigeonhole principle is? If we let the points be our pigeons, and the hemispheres be our pigeonholes, look what happens. We have more points than hemispheres, so there must be some hemisphere that has at least 2 points. And if that hemisphere has at least 2 of these points, plus the 2 points on the dividing line, then it therefore contains 4 out of the 5 points on Earth. So for any 5 places on Earth, 4 of them will always be on the same half of the planet.
proven by the pigeonhole तो इसको प्रूव करने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक एन हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर में हम 2 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। इन 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स सी ऊपर देखिए आप, तो 2 पॉइंट्स हम लेते हैं एज अ जो बेस में आएंगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सी ऊपर देख सकते हैं आप हेमिस्फीयर और उसके बेस में। नाउ व्हाट यू विल डू, यू टुक, तो अब कितने पॉइंट्स बचते हैं? 3 पॉइंट्स। और देख सकते हो आप 3 पॉइंट्स जो रिमेनिंग है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमने यूज़ कर लिए बेस में। अब कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 पॉइंट्स है, ये कितने स्फीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हमें करने हैं? 2 स्फीयर्स में। तो यहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? तो यहाँ पर हमें पिजन होल प्रिंसिपल कुछ बता रहा है। तो देखो आप कितनी रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं? हम यहाँ पर पिजन्स लेंगे, पॉइंट्स, पॉइंट्स कितने? 3, होल्स कितने? 2, स्फीयर्स कितने बनते हैं? एक स्फीयर तो हमने ले लिया, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली बनेगा ना, कॉमन सेंस है ना, दूसरा खुद बनेगा दूसरा स्फीयर ऑन द अर्थ। तो जब स्फीयर है 2, तो उनको हम लेते हैं एज अ पिजन होल। तो अगर हम पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो एटलीस्ट एक स्फीयर में 2 पॉइंट्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ऊपर देख लीजिए आप, तो 2 पॉइंट्स तो है ना, तो ऑलरेडी बेस में 2 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट्स आ गए। तो ये बता रहा है कि एटलीस्ट 4 पॉइंट्स एक स्फीयर में होंगे ही होंगे। तो समझिए इस एग्जाम्पल को, कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो आप 5 प्लेसेस चूज कर लीजिए, एटलीस्ट 4 प्लेसेस एक स्फीयर में आएंगे ही आएंगे। हाउ गुड इट इज़, आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी एग्जाम्पल है ये। तो अब आप इसके एप्लीकेशन पार्ट्स खुद ढूंढ सकते हो, जस्ट लाइक मैंने अभी बताया प्लेसेस, यू कैन फाइंड, आप बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी फाइंड कर सकते हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। And the pigeonhole principle isn't just useful for solving puzzles. It has practical computational consequences too. One natural extension of the principle has to do with compression, converting some longer representation of data to some shorter representation. There's a particular form of compression called lossless compression, where, as the name suggests, no information is lost in the compression process. In other words, once we have the compressed version of the data, we can perfectly reconstruct the original information. Using the pigeonhole principle, we can prove that there is no way to have a lossless compression algorithm that always produces a smaller output for any given input. How can we do that? Well, if the input has n bits, there are 2 to the n possible values the input can take on. And if the compressed output has some smaller number, say m bits, then there are 2 to the m possible outputs from this compression algorithm. There are more possible inputs than outputs, and that's the key for the pigeonhole principle. The inputs are our pigeons, the outputs are our pigeonholes, and since there are more inputs than outputs, then there must be some output that is associated with at least 2 different inputs. And if the same output is associated with 2 different inputs, then there's no way to perfectly reconstruct what the input is from this output, because we wouldn't know which of these 2 was actually the original data. All of these problems and more, different problems that at first glance don't look similar at all, ultimately rely on the same principle to solve them. And that's the beauty of taking some idea and formalizing it in a generalizable way. Once you know the principle, even if it's obvious, you can begin to see pigeons and pigeonholes as they appear in other, seemingly unrelated problems. And as a result, see where the principle might be helpful in solving all sorts of different problems. अभी जो है ना, ये बता रहा है, जब जो और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा है अबाउट लॉसलेस कंप्रेशन, जब हम डाटा को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो असल में आइडिया क्या है कि जब मैं कोई डाटा कंप्रेस करूं, इनपुट को आउटपुट में, जब मैं इनपुट को एक इनपुट फाइल को कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो कुछ आउटपुट मिलेगा मुझे, मगर जब मुझे वो ओरिजिनल फाइल वापस चाहिए, तो मुझे वो ओरिजिनल फाइल, यूनिक फाइल चाहिए, ना कि कोई और। तो एक्चुअली पिजन होल प्रिंसिपल इसमें बहुत बड़ी हेल्प हमें करता है। देखो हमारे पास, देखो आप देख सकते हो ऊपर के, हमारे पास इनपुट से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स 2 रेज़ पावर n एंड देन 2 रेज़ पावर m, यू कैन सी इट अबव। तो आप देख सकते हो इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट्स कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक जो आउटपुट है उसके 2 इनपुट्स हो सकते हैं। तो इसका जो मेन मोटिव है कि हम सब फाइल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनके 2 इनपुट्स आ सकते हैं। इसीलिए जब आप कंप्रेस करने जाते हो फाइल्स, फॉर एग्जांपल 1000 फाइल्स, तो 900 ही सिर्फ कंप्रेस हो जाती है, आधी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके 2 इनपुट्स हो सकते हैं, तो ओरिजिनल फाइल वापस हम रिगेन नहीं कर पाते।
तो यही ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि हमें पिजन होल प्रिंसिपल कैसे ज़रूरत पड़ता है, तो हमें वो आइडिया देता है कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। समझ आ गई बात? तो दिस इज़ द यहाँ पर जो हमें 2 रेज़ पर एन मीन्स इनपुट जो है, इनपुट इज़ नंबर ऑफ पिजन्स और आउटपुट इज़ पिजन होल्स एंड यू कैन नाउ यूज़ द प्रिंसिपल। तो दिस आइडिया बिकॉज़ आई रियली लाइक इट, क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत ल्यूसिड है। मगर इसकी इतनी एप्लीकेशन पार्ट है कि हमें समझ नहीं आता है। जैसे हम बर्थडेज़ पे दे सकते हैं कि अगर अ, बर्थडेज़ हम यूज़ करते हैं, एज़ अ बर्थडे एग्जांपल हम यूज़ करते हैं बहुत में। तो ऐसे-ऐसे सच बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत एग्जांपल्स होती है। तो एक्चुअली ये नहीं है कि बट वी कैन फाइंड सम एप्लीकेशन पार्ट्स ऑफ इट, बहुत अच्छी-अच्छी। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड होप यू हैव एन्जॉयड इट।